Hello everybody, I'm Dr. Neha Taneja. So today I thought that your NEET PG 2020 is over. Let me just give you an analysis, a brief outline about the paper. And मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं that मैम idle attempts क्या होना चाहिए, cut off mark कितना होना चाहिए. So let me just give you a brief idea about all of that. Okay, but before we start, please remember exams are over. ठीक है, you're done with NEET PG 2020. Whatever was done in your paper is done, and I'm sure the amount of hard work that each one of you has put into it, you have performed very well. You will get what you deserve, so nothing to worry. ठीक है, जो कर रहा है वो कर रहा है. ठीक है, so just with a clear picture in your head, try and listen to this video. I'll try to answer a lot of your questions and what your next step should be. But before we go to the video, just relax. Don't think about too much about the paper. अच्छा किया है, be confident, all shall be good. ठीक है, so let's quickly get started with the analysis. So for the NEET PG 2020 paper, what I noted was that तीन बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है इस पेपर के. नंबर वन, द पेपर नो डाउट वॉज लेंदी. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स द पेपर वॉज डेफिनेटली लेंदी. ठीक है. सेकेंड, द पेपर वॉज मोर ऑफ क्लिनिकली ओरिएंटेड पैटर्न. ठीक है, मोर क्या, बहुत ज़्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड था. इट वॉज मोर ऑफ अ क्लिनिकली ओरिएंटेड पेपर. ठीक है. थर्ड, द पेपर वॉज टफ. ठीक है, सो द पेपर वॉज डेफिनेटली टफ व्हेन यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर्स. 2019 से तो डेफिनेटली टफ था. कहीं ना कहीं 2018 से कंपेयर करोगे तो इट वाज ऑलमोस्ट द सेम, बट स्टिल ऑन अ स्केल इट हैज़ बीन टफर देन ऑल द प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटेड. नाउ गाइज, प्लीज रिमेंबर, अ टफ पेपर इज अ गुड थिंग. ठीक है, अ टफ पेपर तुम्हारा था बट इट वॉज सॉल्वेबल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि टफ था, इट वॉज नॉट सॉल्वेबल, इट वॉज सॉल्वेबल. देयर वर सर्टेन ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो आपको लगाने थे वाइल सॉल्विंग दैट पेपर. ठीक है, सो जब पेपर ना टफ आता है, प्लीज़ रिमेंबर जो मार्जिन ऑफ एरर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, द व्हाट यू कैन मेक. ठीक है, टफ पेपर होता है, उसमें एक चीज़ हमेशा निकल के आती है दैट इट्स इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क करते हैं, हु बीन वर्किंग थ्रू आउट द ईयर एंड हु हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लास्ट मिनट वन लाइनर्स वील मग अप एंड वील गो एंड सिक्योर अ गुड रैंक. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सेटिंग द पेपर्स मोर ऑन a clinical pattern, and for that you need to build your concepts. There is no scope of shortcuts. अब shortcuts का कोई scope रहा ही नहीं है. ठीक है, the entire paper is on concepts. The entire paper needs hard work for more than a year. ठीक है, which means that you need to start your hard work right from your internship. In fact, all throughout 4 years जिसने पढ़ा है उसके लिए भी the paper was solvable. ठीक है, because you have spent time in building your concepts, and those who have paid attention towards attending your postings, your internships, ठीक है, interacting with faculty, discussing the questions, kept on discussing, kept on direct question नहीं है. अगर कोई मान लो रिस्क ड्रॉप हुआ, फुट ड्रॉप हुआ, वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, वो उसको इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कौन सा नर्व इन्वॉल्व था. सो इफ यू कीप डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, योर फैकल्टी, अटेंड योर पोस्टिंग वेल्स, डेफिनेटली सच काइंड ऑफ पेपर्स विल बी सॉल्वेबल. बिकॉज गाइज प्लीज रिमेंबर, अब पेपर्स ऐसे ही आएंगे. इवन द सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल, दे वर ऑल्सो सेट on a clinical pattern. ठीक है, so questions ऐसे ही आने हैं. the important more of USMLE pattern. Why? Because we are also trying to shift from the regular basis, the regular question answers thing to more of clinically oriented. ठीक है, तो MCI भी यही कर रहा है, right? That is why questions भी वैसे आएंगे. They are going to test your intelligence, your logical reasoning, so that you become good doctors. It starts from papers like this. So important point is कि concept build करना बहुत ज़रूरी है. After looking at these papers, one liners पे you can no longer depend. ठीक है, and you need to interact and discuss a lot.
ठीक है. नाउ लेट्स कम टू दैट लेंदी क्वेश्चन पार्ट. ठीक है, अगर क्वेश्चन लेंदी है, डेफिनेटली इट वाज 6 to 7 liners question also, but there is always a trick to solve those questions. I've previously also told you, ज़रूरी नहीं है कि 6 to 7 liners question को you need to read continuously. ठीक है, you just need to identify the keywords, and if you're able to identify the keywords in those 6 to 7 liner question, your answer is then and there. हमेशा जब वो लेंदी क्वेश्चंस देते हैं, there is a rule that they will provide keywords with it. Identify those keywords, you will be able to solve. ठीक है. Now let us come to the question about the pattern of questions. I have told you previously also, questions में 80% are always must know questions. जो इस पेपर में भी था, 60 to 80% were must know questions. उन्होंने जैसे भी उसको डाला हो, but they were whether asked directly in a one liner or indirectly in a clinical pattern, they were 50 to 70 must know questions, which you should have been able to solve to get a good decent rank. ठीक है. 15 to 20% टफ क्वेश्चंस होता है. नाउ गाइस प्लीज रिमेंबर, टफ क्वेश्चंस कभी तुम्हारा रैंक डिसाइड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, व्हाट डिसाइड्स योर रैंक इज योर गुड डिसेंट रैंक इज द मस्ट नो क्वेश्चंस दैट यू शुड हैव सॉल्व्ड. ठीक है, सो पैटर्न वाज द सेम. Too much of medicine, definitely 50% was very easy and 50% was tough. Then all our lengthy subjects had their own weightage उतना ही, and the shorter subjects का weightage कम था. So weightage में there was no issue. Again I'm telling you, if the paper was tough, it was solvable. ठीक है. So these three things you should know, you should remember. And one thing, students की बात में number of idle कितने questions mark करने चाहिए थे, idle attempt क्या होना चाहिए था. तो इन papers में कोई idle attempt नहीं होता है. ठीक है guys, someone might have marked 280 questions, on the other hand someone might have marked 220 questions. ठीक है, दोनों के चांस बनते हैं. ठीक है, बट इफ यू मार्क समवेयर फ्रॉम 240 to 270, you're on a safer side, you're at a good side. ठीक है, सो देर इज you've done well, you can think that I can get a good rank. Now questions mark करने में बहुत बार बच्चे कहते हैं मैम silly mistake कर दिया. होता है silly mistake in such papers, please don't worry about it. A couple of silly mistakes here and there happens, don't worry about it. What is the problem with silly mistakes is that मान लो तुमने कर भी दिया है, तुमने obviously हमारा human nature ऐसा है कि तुमने कुछ questions में तुक्के मारे होंगे. You must have attempted a few tough questions कि यार मार देते हैं, देखते हैं. सोचो उनमें से मान लो 3 ऐसे किए हैं, एक सही होगा. ठीक है, सो 1:3 रेशियो का में हम सोचते हैं, तो अगर एक कपल ऑफ सिली मिस्टेक किया है, दैट माइट बी मेड अप फ्रॉम द क्वेश्चन दैट आपने तुक्का मार के किया था. ठीक है, सो डोंट वरी टू मच अबाउट दो सिली मिस्टेक्स. एंड वन थिंग, क्वेश्चन रैंक कभी इतना आपके टफ क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होता है. जैसे एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक लंग कैंसर का स्टेजिंग, TNM स्टेजिंग, nobody reads that in detail. So if you've attempted that question and if you get it right, good for you. नहीं तो don't worry about it, क्योंकि maximum students नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि आइडल अटैम्प्ट्स नहीं है, सिली मिस्टेक्स का कोई दिक्कत नहीं है. एंड वन मोर थिंग दैट स्टूडेंट्स बोलते हैं, वी डिडंट गेट टाइम टू रिवाइज. ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ लेंदी पेपर. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, रिवाइज नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू मार्क द क्वेश्चंस, ओके, व्हाट हैपन्स, व्हाट डज योर इंस्टिंक्ट्स से दैट what you're marking the first time is correct. Please remember that. Most of the times it happens. So revise नहीं भी कर पाए, दिक्कत नहीं है. Just think that जो मैंने पहली बार मार्क किया था वो सही था, because that is what happens. Second time जब तुम मार्क करने जाते हो ना, it usually turns out to be wrong. That's what we've noticed, right? So think about it as that way. कि revise करने नहीं मिला, it's good only. Maybe it's a blessing in disguise, because first instinct, trust your instinct, you'll do well. Okay, so this is about this. So out of this pattern of paper that we saw, what comes out is that from next time onwards, if you get a good rank, well and good for you. If you decide to sit again for your NEET PG or AIMS DIPMA in November, in May, June, please remember, start building your concepts. कोई shortcuts नहीं है to success. चाहे studies हो, चाहे personal life हो, professional life हो, there is no shortcut to success. Everything needs hard work, investment.
ठीक है. So build your concepts. For concept building, start interacting with your faculty, your teachers, your friends. Keep time for group study. Don't waste your time, please remember. And the very important thing is consistency. रोज पढ़ो, divide your time equally. Tougher subjects को ज़्यादा time दो, but consistency has to be maintained. Okay. And the golden point of securing a good rank is keep revising. Revise. देखो आजकल information is everywhere. Too much of, you have so many guides, you have so many online stuff, you have so many online lectures, so many videos and everything. जितना information gather करोगे, it will keep piling up. Okay. You might gather all the information, but you did not revise any of it. It's of no use. ठीक है. 50 चीज़ें पढ़ो, but उसको 10 बार revise करो. इन कंपेरिजन टू 200 चीज़ें पढ़े और हमने उसको रिवाइज ही एक बार किया, इट विल सर्व नो पर्पस. इफ यू हैड डन दिस फॉर योर पेपर दैट यू रेड ओनली 100 थिंग्स बट रिवाइज देम लाइक 30, 40, 50 टाइम्स, यू वुड गेट अ good rank. Okay, so this is very important. Consistency रखो, build your concepts, दिमाग लगा के question solve करो, look for keywords in the questions, practice more and more of MCQs, group studies रखो among your friends to keep talking about questions and answers rather than talking about series on Netflix and so on and so forth. ठीक है. Spend your time wisely. एक साल की बात होती है, दिमाग लगा के wisely time spend करो. मुझे किन subjects को कितना समय देना है, because this is something you can only decide. Nobody can tell it for you, not even your teachers, that they can just guide you. The inner thing has to come from you. ठीक है. So even for PSM, I saw that there were a lot of image-based questions and there were a lot of easy questions also, कुछ tricky questions थे. So I'll put out a video soon about maybe in a day or two about all the questions from PSM that were asked in your exam. Now again, a line of word of advice. This video is totally what I think, my perspective. So try to gain from this video that I've told you, certain important points. And just last word of advice, be patient, be relaxed, try and meditate, stay calm. You've done well, don't worry, this is not the end of your life. Okay, keep working hard. This exam is not the last exam. आगे और एग्जाम्स आएंगी, आगे और चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, तो कहीं पे भी फॉल्टर नहीं करना है. हैव फेथ इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट, and respect your teachers and parents, and you'll definitely do well. Okay, all the best for your result.